So I'll be asking questions and I'll appreciate if you yourself come forward to answer. Okay. Okay, the first question today. Do you think technology is the reason for the increase in the rich-poor gap? Yes, Akash. Yes, because I think in some ways technology is the reason to for the discrimination in between the rich and poor, as with the as due to the technology, many people buy the expensive things who are very rich, and they flaunt in front of others who are poor. But poor are not poor do not have the opportunity to buy the expensive things. So that's why in some ways the technology is the main reason to but discrimination between the rich and poor. No, but when the rich flaunt their items and the poor, they feel bad about it. Is that the reason for the rich-poor gap? No, rich do like that and the poor do like that. That is different. Akash, what my question is technology the reason for the increase in the rich-poor gap? May I try this, ma'am? Yes, yes. No, I do not think that technology is the main reason behind the rich and poor gap. I think even technology has made people enabled to earn some money from using different applications like social application as well as some website. Even recently, I came to know about the Bitcoin money that was earned by many people in the world. I think technology has enabled people rather more able to earn money rather than make the difference between rich and poor. Very good. Is So it? actually, this is a question that some people say technology has increased the rich-poor gap, whereas other people say that in fact technology has decreased the rich-poor gap. So you can say, discuss both views. That is the question. So you can say technology has increased the rich-poor gap, and then you can say that because of technology, the rich can, earn more money, and because they have more access to technology, and the poor stay at the same level. So that in that way, it has increased. But with the what answer, Parminder? You have given the answer, na? Just now. Hanji. Yes. Hanji. So the answer Parminder has given, according to that, you can put the views of those people who say that technology has decreased the gap because technology has brought huge opportunities for people where none existed previously. Okay. Oh, yes. Right. Communication technology and networking have given people chance to earn and, bridge the rich poor gap, in fact. Yes. Okay? And because of technology, now we have, because of technology only now we have cheap cell phones and, low priced cars, which everybody can afford. Oh, yes. Right. Yeah. So in fact, technology has decreased. See, you will see a cell phone in the hand of every Tom, Dick, second and people. Harry. Right. Oh, acha. Ma'am, Tom, can you Dick, and repeat it, Harry. please? Tom, Dick, and Harry की हिंदी क्या है? Every next person, I think कुछ ऐसे बोलते हैं उसको। हिंदी बहुत मजेदार हिंदी है। हरिक कोल जनी खणी कोल एरा गैरा Nattu Khera. Yes, so in English we say that it is in the hands of every Tom, Dick, and Harry, and every era gera nathu gera has a cell phone. Okay, now yeah, it's funny, but it is actual, the thing for it in Hindi. Okay, so now comes my next question. Now you will be able to handle this essay also. Yes, ma'am. Okay. Okay, now we have to, now we have this question. What is the effect of technology on the Olympic Games? This is an essay in the GT book. Okay. So what is the effect of technology on the Olympic Games? The essay topic is, some people say that technology has reduced the role of Olympic Games, the importance. Okay. And my question is, what is the effect of technology on Olympic Games? And let one GT student answer this question. So come forward. Can I, Parminder? Yes, Parminder, try this question. What is the effect of technology on Olympic Games? I believe that there are many positive effects of technology
on Olympic Games because of technology. Nowadays, people can watch the game from the beginning till the end. In the earlier times, it was not possible because there was no, uh, uh, there were no large number of televisions available for people. But now technology is quite cheaper, and everybody can afford to buy the uh, the mobile phones and LCDs and radio. Also, apart from this, because of the CCTV cameras and a high tech technology cameras, we can see a single movement of the game, and we enjoy it wherever wherever we are in any part of the country. So definitely, technology effect a very positive impact on the Olympic Very Games. very good, Parminder. You can put all these points in the essay, and then apart from that, what I have written in my notes is that technology now plays a part in every aspect of these games, from the first torch relay handoff to the closing Yes, ceremonies. It was yes. not possible earlier, okay? Earlier, And then yes. athletes and trainers, they use technology in preparing for the games to optimize their training. Sports equipment manufacturers use design technology to build improved apparatus, gear, and more that will enable the clients to deliver a high level of performance, okay? Ma'am, And broadcasters use technology to broadcast. better inform viewers of all aspects of the games, मैम okay? ये भी आ सकता है कि it is inexpensive, so because now people do not want to buy the tickets, and they can see the whole Olympic Games by sitting in their comfort zone. Yeah, actually, Parminder spoke that point. She said that now more and more people can watch it because there is too much of telecast and broadcast of these games. Earlier, it was not possible. Only those who could go there could watch them. Okay. Now it is, worldwide. People are watching them sitting in the comfort of their homes. Right? Okay. Now my मैम next ये भी question. Pardon? मैम ये भी पॉइंट आ सकता है कि people keep an eye on others while putting camera surveillance. Yes, I In mean, our- even the people who are doing unethical means to win, What's they can happening also be in- caught because of technology. Okay, and in the results are in milliseconds, in fractions of seconds at times. So that can also be better caught using technology, right? So many things you can put up. So technology has not reduced the role of Olympics. In fact, it has even increased, the value and the role of Olympics. Right? Now we'll go to another question that is also an essay question. What are the advantages of playing computer games for children? And the answer will be spoken by Venkataraman. Are you there? Yes, good morning, ma'am. Good morning. What are the advantages of computer games for children? Playing computer games would be more ideal for us kids because they are getting used to about the technology and the ways how to operate these Very computers Very from good. the young age. Even Yes. though they can be more creative, like if you are playing some competitive games like Sudoku or somewhat, they are using their mental ability to solve that puzzles. Very So good. it will the stimuli will be on the brain so that they can perform well, even though some of the games are like shooting, so they will be playing in the remotely, so with their friends, so it will be share also positive, and they will also communicate with them, so Yes. their communication with the others also will improve. Okay. And they get used to the playing games will be improved in all aspects. Yes. So as far as your speaking is concerned, this answer would be perfect to speak over there. But I'm giving you 2 more points. Yes, ma'am. Video games improve visual skills and motor skills. Have you ever watched children play? Something is coming from the top, something from the bottom, and their visual skills improve. They catch, everything so soon. And then, these games make learning fun because the cost of failure is lower. Okay. Yes, ma'am. This encourages children to take risks and explore more. Okay. And supposing the child gets the answer wrong, or the character dies, he just starts the game over and tries again.
Okay. Yes, So ma'am. these, Yes, and ma'am. you know, then some games are there which have therapeutic applications. You know what is therapeutic application? What does that mean? No, ma'am, I have Yes, not ma'am. heard. Therapeutic. Yes, Sapna, you'll answer. Yes. What is therapeutic applications? थेरेपी कोई डिप्रेशन में है तो उसी से Yes, ओवरऑल yes. These act as antidepressants at times. Okay. These Okay, act ma'am. as antidepressants at times. Okay. Okay, fine. Okay. Take care, ma'am. What are the disadvantages of playing computer games for children? Harjot Singh. Harjot, will you like to answer? Okay, Hari, would you like to answer? Yes, What are ma'am. the disadvantages of playing computer games? Prolonged Uh, exposure to the computer screen may damage the eyes. Very good. Also, it tampers with the mental status of children in Damages some with the, instances. nahi, damages the, okay. Okay, you can say that, but how will you expand this point? I told it tampers with the mental status of children if they use some games for a prolonged time, like the game itself sometimes giving advice that prolonged exposure may results in some kind of schizophrenia. Schizophrenia. You're Some going kind. too far. That's it, ma'am. Okay, speak only those points which you can expand on, because remember one thing, the follow-up questions will have cross-questioning. You all know that. Intro sets do not have cross-questioning, but the follow-up questions have cross-questioning. So speak only that point which you are Okay. sure you will be able to answer more upon if asked by the examiner. Okay, so I'll Okay. give you 4 or 5 points for the 2-3 main points. First, these games are isolating. Isolating, number 1. Number 2, addicting. You can expand on these 2 points. You know, isolating because these are usually played alone. Okay. Once the ma'am. child starts to play some, like take a simple game for Mario, you can play for hours. Okay, and forget about homework, forget about eating, forget about everything else. Okay, so isolating is the word. Second word is addicting. Yes, Addicting because children get addiction to playing these games. Okay, isolating, they're played alone. Addiction, when a child starts playing, he goes on playing for hours and forgets everything else. So there's an addiction to these games. Then these games can confuse, because of these games, the child can confuse fantasy with reality. Do you understand this point? yes, ma'am. So, you know, in these games, motor racing or something, if the accident happens, the child just gets up, the character gets up and starts the motorcycle again. But in actual life, if you fall, what will happen? You will end up in the hospital. मैम PUBG के एग्जांपल हाँ, PUBG मैंने कभी खेली नहीं है, पर उसमें भी ऐसे ही होता है कुछ. Okay, I'm thankfully I've not played because I am you know sure that you know I get addicted to computer games very soon. That's why I didn't start, because I heard from many people that this game is very addicting. So I said, okay, I'll not start. Never ever. Okay. And then you can put the point that some games have violent and aggressive characters, which leads to aggressive behavior in children. Okay. So isolating, addicting, confusing reality with fantasy, and violence and aggression. Okay. You can expand on these points, right? मैम डिप्रेशन वाला पॉइंट भी बोल सकते हैं हम इसमें. डिप्रेशन बाकी घर Like के मेंबर्स को हो जाती है. लाइक जैसे पिछले साल एक न्यूज थी, लाइक दिल्ली में एक बच्चे ने 10 ईयर का था, उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उससे ना लेवल नहीं क्लियर हो पाया थे गेम के, तो डिप्रेशन में उसने सुसाइड कर लिया था. ओके, ब्लू व्हेल सिटी गेम, यू कैन पुट दैट पॉइंट. यस मैम, लाइक फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है वो भी. हाँ, दिस इज आल्सो अनदर पॉइंट. फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. दीस गेम्स आर, you know, the child just sits for hours. So sedentary activity है ये. Sedentary word कर लो. Okay. So do isolating, addicting, sedentary.
Okay. मैम आई स्ट्रेन बोल सकते हैं ना, उनकी आईज में मतलब कि ज्यादा Eyes, टाइम. yes, too much screen time is bad. Too much screen time is bad for the eyesight. Okay, that you can say. They spend more time on games rather than studies. Why do today's children play computer games and not play outdoor games? Why do most children play computer games and not play outdoor games? Well, we have here Aman from Paroli. Will you answer? No. Hello. Yes. Yes, ma'am. Yes, answer the question. Why do children play computer games more and outdoor games less? I think because of presently lockdown is the main reason for this. Okay. And moreover, they have a lot of gadgets such as video games, PlayStations, and others, and cell phones also. And there are many video games apps in cell there. In their Bunny വെച്ചിന്റെ ഒരു Okay, huh. Okay. Very good, Aman. Very good. You spoke very well. Okay. And even parents don't encourage them to play outdoors because they think their children are safe confined in the four walls of the home. Okay. Parents are work oriented. Yes. So they don't And have then, nuclear families. what are the disadvantages of playing outdoor games less? What are the disadvantages of playing outdoor games less? Ma'am, lack of physical activities. Yes, and all the problems related with lack of physical activity, like obesity. Childhood obesity is a big problem. It's a burgeoning problem. What are the disadvantages of playing outdoors less? When children become introvert. Okay, so what are the disadvantages of playing outdoor games less? Playing outdoor games less has obesity and all. Na? Playing indoor games more, that is the problem. Yes, so outdoor games less. Okay, so there is another point which I have written in one of my essays. Because of this spoken class, this speaking class is giving you ideas. So my main aim is giving you ideas for the essay also today. I put it up in the message also, that believe me, you will have ideas for the essays also. So there is a term, nature deficit disorder. This is a new term. This is a new disorder researchers have found. That is nature deficit disorder. Okay, which is seen in children who play indoors. They found out that children who were in contact with nature were less stressed out with life. So basically, when children don't play outside in the natural world, they miss the great benefits that nature provides. You can add this point in your essay. Okay, so any one of you will repeat this point. Ananta, can you repeat what the point I've just spoken? It's something that you will, if you know, you can write, and you can, this will be a good point to put in the essay. Ma'am, I haven't written, that is why. No, just listen and speak. Na? It's not like that. Okay, it's a small thing which I just spoken. Anybody, Dipali, would you repeat? Ma'am, actually, a lot of disturbance here, so that I'll speak after 5 minutes. Okay, I'll repeat it for all of you. Now listen attentively. Okay, and that is, the major disadvantage is that researchers have found a new disorder known as nature deficit disorder. Nature deficit disorder. Nature is the outdoors, nature, natural beauty and all. Deficit is kami, lack, deficit. Disorder, you know the meaning. Okay, so nature deficit disorder, which is seen in children who play indoors. जो indoors खेलते रहते हैं उनमें ये disorder देखने को मिला है. They found that children who were in contact with nature were less stressed out with life. So basically, when children don't play outside in the natural world, they miss the great benefits that nature provides. For speaking, whatever you spoke earlier was okay. But if you have to write the essay, such a point will help you. It will make your essay better. Okay? Okay, ma'am.
Okay, so the next question is, okay, there is one essay in the GT book, I suppose, but it can come to the academic students also. What are the advantages and disadvantages of adults playing computer games? Okay, what are the disadvantages of adults playing computer games? Advantages and disadvantages, yes. So what are the disadvantages first if adults play computer games? And it has been seen that more and more adults are also being involved, not just children. Okay, so what are the disadvantages of adults playing computer games? Yes, They will who will not say? concentrate on this. It's very dangerous for their health. Okay, in what way? Like mental retardation. Mental Mental retardation. retardation to mat bolo bhai. That is going too far. Ma'am, that stage Like- of young adult age, that is very Gurpreet crucial. was answering. Gurpreet, please yeah, continue. yeah. There are. Eva, I am muting everybody. Gurpreet, unmute yourself and speak. Yes. Gurpreet, you can unmute and speak, please. Can you repeat the question, please? The disadvantage What of is the advantages and disadvantages of adults playing computer games? like when adults play too much games, that's very dangerous for their health. First of all, if an adult they have to walk to maintain their health, for their cholesterol level and different types of other disease, like if they sit too much in front of the TV, like video games, they get more more disease like obesity problems and Yes, more yes. stress Very while good. they are Okay. Yes, and in addition, they may also get addicted, and if adults get addicted, they will have difficulty in addiction ho jayegi. So what will happen? Difficulty in sleeping, migraine attacks are seen more, back and neck aches and dry eyes. All these health problems are associated, and then adult becoming a gaming addict would neglect what children would neglect studies, but what would an adult playing, their employability. मैंने यही yes, पूछना था आपसे. he would neglect household responsibilities. नहीं, काम नहीं छोड़ेंगे. See, अच्छा जी. आपने इस ऐसे का, जब मैंने इसका रिसर्च करा तो काम तो करते हैं 8 घंटे, बिकॉज पैसे तो कमाने हैं, बट घर आते ही रास्ते में ही वेट करने लग जाते थे कि घर जाके ये गेम खेलनी है और बैठ जाना, and neglect every household responsibility, anything, and that even the family time was disturbed. Okay, Ma'am, can we say like that whenever they get some time while working or even in sitting in offices and cabins, they they steal that those few minutes to again get interacted to their game. yes, So it will yes, affect to their play games. work, I think. Yes, yes. Also, And they yes, will get social. Ma'am, This will also the reason of disintegration in the families. yes, this is a reason. Okay, so yes, this is a reason. Okay, so and the advantages are, the advantages, therapeutic applications. Yes, one, depression, they are stress busters. Okay, yeah, it takes a stress and buster. yes, so they need time to relax, unwind, and take their minds off real life. But the disadvantages are only when these games get addicting. Okay, they're playing for some time, like 1 hour or so every day, is not at all addicting, is not at all having any disadvantage. But once these games get addicting, they have all the disadvantages. Okay, now the next question is, some people say computers have made the world a better place. Others say they have not made the world a better place. Okay, so how have computers made the world a better place? Now we'll have Manjeet. Will you answer? How have computers made the world a better place? Yes, ma'am. Computer is a need of everyone nowadays. So based on various factors which are now available, only through the computer make a world a better place. Like we can transfer, communicate with anybody
easily by using computer applications. And we are also using technology like internet and various gadgets to have a good variety, a good vast amount of information through the help of internet. So every resource that nowadays we are moving on and getting from by the help of internet make us more informative about all these things, which make us more dependent on these facilities. So it's very best option to have these facilities. Even we are trying to get more knowledge. Answer is very good. Very best, मेरे को लगता है very best option is wrong English. It's a very good option or the best option. Okay. See, computers have advantages and disadvantages of computers. All points are correct, because computers, when we talk of computers, we also talk of the internet, okay, employability and all. And many new jobs have been created, you can say. But disadvantages, so what are the disadvantages? Amanpreet, will you answer? What are the disadvantages? Being addicted is biggest disadvantage. Being what? Addicted, using internet without acknowledging the importance of time. Yes, that is see, unemployment, it has led to unemployment. You can say that point. Manual labor jobs which were done by reduced physical skills. Example दे सकते हैं physical, yes, lack of creativity. We can say that people are become materialistic because of computers. They don't want to meet each other. They're just sending messages. So all these are interrelated points, you know, about the internet and all. Okay. Eyesight Old, okay. ma'am, old generations are not being able to cope up with the new technology. Yes, yes. And increased dependence. So these, all these points are very, you know, overlapping points are there. Advantages and disadvantages of modern technology. Let me have it from someone. Meenu, will you answer? Meenu is there. Would you like to talk about the advantages of improved modern technology? Yes, ma'am. There are various kind of hello. Yes. Ma'am, something disturbance aa rahi hai. Okay. Now I've muted all. Now Meenu, you will unmute and speak. Yes. Yes. I've muted all of you. So one of you, Meenu Kumari, was answering, I think, or Simran was answering. I don't know. Yes, Meenu. Ma'am, can you repeat it again, the question, please? Yes. What are the advantages of modern technology? Okay, according to me, there are various kind of the advantages, such as we can get the any kind of the information from the technologies. Even though we can communicate with each other, even we are stay in the any side of the corner, city or village. It is the beneficial for not only for the study, but also it's quite beneficial for everyone. We can get the more information. We can update our knowledge related to our field, as well as it is a what can I say? You know, you are talking of only communication technology. You can talk of the other technology also. You can talk about faster modes of traveling. Remember, if the essay is on communication technology, then all your points are correct related to communication. Okay. But if it is a general question, you can talk of technology in health field, technology in the education field, technology in the transport and travel field. For security. Yes, for security. You can talk of that. That becomes a very wide question. So you can talk of almost anything. As it is, your answer for speaking was quite effective and good. Okay. So what are the disadvantages of you know, technology apart from communication technology, other technologies? What are the disadvantages? Like you talk about the washing machines and you know, other such modern tools. मैम रोबोट्स की बात कर सकते हैं? Yes, you can talk about robots. मैम उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है. Unemployment, yes.
Yes. So, and Ma'am, it also privacy. reduces the creativity and of the Ma'am, privacy because they suffer. don't have to. Yes, प्राइवेसी का बोल सकते हैं. yes, you can talk of anything. Physical, ma'am, less physical activities. Yes, yes, Yes. less physical activities. एंड Okay. मैम ये भी कह सकते हैं ना इसमें कि बहुत सारे जो आजकल की न्यू जनरेशन है वो कंप्यूटर पे और जैसे भी हैं ग्लू रहती है सारा टाइम और उसको जो है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है और ओबेसिटी का कारण भी हो सकता है काफी सारी डिसीजेस भी कैरी कर लेते हैं बच्चे. Yes. Okay. Now I'm asking you a question. Advantages and disadvantages of the social networking sites. Okay. Advantages and disadvantages of social networking. I would like other students also, silent spectators of this to come up and answer. बाद में बोलते मैम हमें बोलने का मौका नहीं मिला. मौका तो हम दे रहे हैं, अब आगे ही नहीं आते हो. So let us have from one answer from Prince Raman Banga. Raman from Banga. Prince, come on, be active. What are the disadvantages of social networking sites? First, the disadvantages. Raman. Yes, Raman. Firstly, I think that the main disadvantages of social networking sites is that people are less socialized. People are less? I'm less socialized. They are less, no, social networking sites. You can't. No, ma'am. Yes. They don't meet the people in person. Yes. So you should specify that face-to-face interaction has come That's why they are getting Yes. less socialized. Yes, I meant take face-to-face interaction decrease. Like Face-to-face interaction has come down. Okay. Okay. Apart from this, what are the other disadvantages of social networking sites? They become introverts. No, people make fake ID. They easily rely Introvert on. वाला point भी अगर आप People become stand कर लोगे, addictive. वो भी ठीक है. Okay. That's People also easily there. rely on. Ma'am, Girls mongers spread harassing rumor. has increased. Mongers spread rumor through social networking easily sites. Very rely good. on Rumors can spread. Terrorism का point डाल सकते हो? Yes, ma'am. They can be used to advance terrorism, and then you can say privacy आपकी compromise होती है कहीं ना मैम कहीं. लड़कियों को हरास करते हैं जो लड़के फेक आईडीज बना के. Yes. Ma'am, sometimes people make fake ID on internet. And those IDs, they can bully others. They can डाटा bully or चुराया जाता threaten. है डाटा like जो भी They also hack others. hackers Yes. hack होता है mostly. Hack होता है ना. So privacy का issue डालो. Okay. Unauthenticity. Another They can reason, use to ma'am, we promote can add in crime, this organized that, crime, venue for bullying. Ma'am, Okay, what are the advantages? Now let's Hello, come to the ma'am. advantages. Amrinder, will you speak? May I, Naman Sharma? Naman, yes, of course, Naman. Why not? There are so many advantages. People are in social networking site. They become run their businesses. Very good. Very good. And they Very own- good point. Own businesses, and they become entrepreneur. Learn Entrepreneur. the pronunciation of this word. Ma'am, entrepreneur. 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 Okay. Entrepreneurs. Okay. Okay, ma'am. Okay. So very good point. And then, you can just with one point, you can give an personalized examples, example. You ma'am. can say your friend is running his, you can say boutique Ma'am, or an Instagram. educational center. He's just Instagram promoting. से मैम सेल्स वगैरह होती हैं. Ma'am, we can talk about online business also, which is gaining Yes, ground ma'am. these days. Very Work good. from home, Yes. ma'am. Yes. Yes. Okay. Many students who are living in a foreign country, Canada and USA, for a study purpose, Ma'am, they lockdown. can continue to engage with their family to They meet their family one-on-one Yeah. with the help of video calls. Yes. And it has become very affordable. Yes, ma'am. Ma'am, lockdown का Like example we are connecting with a Zoom meeting, and we are studying right off the corner in the any. Yes. Very good. We An can be example in from touch with latest fashion. So whatever topics I'm touching today are all essay share topics. anything with us. Yes, ma'am. Okay, all these are essay topics. You can realize that you are understanding that this is killing two birds with one stone. Now, if you get an Yes. essay, you can write. Ma'am, yes.
Yes. Yes, ma'am. So next question is, has technology made our lives more complex and or more simple? You know, this is the essay question. Some people say technology has made our life more complex. Other people say only technology can simplify. Technology has made it simple. So, has technology made our life complex? Who will answer? Or simplified it? Ashpreet? Bindu? May I, ma'am? Yes, Shaina. Yes. Shaina बोले थे ना अभी? Yes, ma'am. Yes. Yes, हाँ बोलो. Ma'am, can you repeat this question, please? Has technology made our lives complex? Now you can answer it with yes or no. Okay. Okay, ma'am. Yes, in many ways, technology made our life very complex because most of people are depend on technology for many purpose, and due to dependence of technology, we reduce our physical work, and that's why most of people face with many problems like cholesterol, obesity, and that's why they make our life more complex. Okay. Ma'am, may I? Yes. Ma'am, no, technology has not made our life complex because with the use of technology, we can do our household chores with very ease, like the things that we do with our hands are now very easy with the use of technology, like washing machines which wash the clothes, that the work that we do with our hands, and also some other works which are very easy with the technology, like communication, study, and sending messages to each other. Instead of letters, we now communicate with the use of technology on internet. Very good. Ma'am, technology transportation. technology plays a very crucial role in health sector, as nowadays the diseases are diagnosed in a jiffy, and then treatment can begin, which was not possible in the olden times. So life has become simpler now. Yes. Just question आ जाता है. Right के wrong था. No, technology doesn't complex our life. As now, for instance, during this pandemic, we are not able to move out for our grocery shopping, so we can order just with a click and we can get our grocery at home. So this is due to technology, which due to which we are safer at our places. Very good. Very good. Ma'am, Technology has in fact simplified our lives in many ways. Okay. तो yes, जो ma'am, कहते हैं कि in some ways में हम complexity बता सकते हैं फिर. हाँ, अगर देखो आपको ऐसे आए, some people say technology has made our lives complex. Do you agree or disagree? So you can totally disagree and say, no, it has not made our lives complex. It has made our life easy. Right? Right. अगर आप कहते हो, while in some ways it has made our life complex, but on the whole it has simplified our life, then you can make a small paragraph on how technology has made our lives complex. Right? And then make two paragraphs on how it has simplified our lives. मैम ये कॉम्प्लेक्स ना लिखे तो सिंपल से ज्यादा अच्छा बनेगा ना? हाँ, आपका बहुत अच्छा बनेगा. देखो, अगर आप वन साइडेड बनाओगे ऐसे तो बहुत अच्छा जाता है. आपके ऐसे में कंफ्यूजन्स कम होती हैं, और सारे सिंपल वाले पॉइंट्स डाल के पैराग्राफ्स डालो और एग्जांपल्स डालो. योर एसे इज वेरी गुड. ओके मैम, अगर स्पीकिंग में हम ऐसे बोलें कि आई एम ऑन बोथ साइड्स, देन ऑन वन साइड एडवांटेजेस बता दें, फिर एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस बता दें, तो वो मतलब एक अच्छा स्पीकिंग आंसर है. मैम वाइल करके लिख सकते हैं. आप वाइल करके बोलो ना. वाइल इन सम वेज मैम इट हैज मेड आवर लाइव्स कॉम्प्लेक्स, बट जनरली इट हैज मेड आवर लाइव्स मच सिंपलर. देन यू कैन टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स साइड आल्सो एंड द सिंपल साइड आल्सो. जी मैम, हम इंडीड कहां पर कि एक साइड लो स्पीकिंग में भी तो बेटर रहता है. तो इज दैट सो? व्हाट? आई कुडंट. अगर स्पीकिंग में भी एक साइड, जैसे अगर
दो साइड पूछें कि डू यू प्रेफर दिस और दैट, तो फिर एक साइड लो तो वो बेटर रहता है डू आंसर। यू प्रेफर दिस और दैट में तो एक साइड ही रहेगी ना, पर आपको मैम जैसे अगर ऐसा ऐसे क्वेश्चन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला या फिर ये वाला। हाँ तो आप वन साइडेड ड्रॉ, बेटर वर्स नहीं है, इट्स द वे यू हैंडल योर क्वेश्चन, सी इट्स इन योर हैंड्स। ओके, अगर आप दोनों साइड्स बोलना चाहते हो, आपके पास दोनों साइड्स के अच्छे पॉइंट्स हैं, एंड यू कैन स्पीक ऑन बोथ, एंड यू कैन स्पीक अ वाइल सेंटेंस वेरी नाइसली ऑन द स्पॉट। And what points should we use at the complex, in the complex? सी कॉम्प्लेक्स में ना, कॉम्प्लेक्स में ये बताओ, मैं तो ये बोलूंगी अगर मेरे को कुछ बोलना हो कि कॉम्प्लेक्स इसलिए है बिकॉज टू मच नॉलेज, टू मच यू नो, यू पुट समथिंग ऑन गूगल, आप कुछ ढूंढना चाहते हो किसी चीज का सोल्यूशन, एक आंसर चाहिए आपको, 50,000 आंसर आ जाते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होगी लाइफ? किसको सिलेक्ट करो, क्या ढूंढो, क्या नहीं ढूंढो, कुछ भी बोल सकते हो ना ऐसे। मैम ऑनलाइन पेमेंट में भी मतलब ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड देन टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आप हैक हो जाता है तो आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं होगी घर बैठे बैठे। यस मैम। ठीक है, फिशिंग ईमेल्स आती हैं, फिशिंग ईमेल्स में आप फंस जाते हो, आपका सारा का सारा वो डेटा ले लेते हैं। फिशिंग, PHISHING। ओके, मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ वर्ड, ये वर्ड मैंने पिछली बार भी कराया था और बच्चे ना इसको डाल सकते हैं उसमें। शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन। ओके, ये है PHISHING, फिशिंग। Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. See the activity of tricking people by getting them to give their identity, bank account numbers over the internet or by email, and then using these to steal money from them. ये फिशिंग ईमेल्स आती हैं। मैम हम ये पॉइंट भी डाल सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट 1 क्लिक से हमारा मतलब मनी किसी और को भी ट्रांसफर हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ एक बार मेरी एक स्टूडेंट का हुआ, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, उसने करा और मेरे को पेमेंट कर दी, भेज दी, क्योंकि मेरा बेनिफिशियरी एडेड था, किसी और को भेजनी थी। फिर मुझे लिखती है मैम गलती से हो गई, मैं कोई बात नहीं मैं वापस करती हूँ। फिर मैंने उसकी वापस करी, उसको मेरे को बेनिफिशियरी डालना पड़ा, एंड देन यू नो सो दैट इज हाउ यू नो इट हैपेंड। ठीक है, एंड थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन। ठीक है, और फिशिंग वाली आप पॉइंट ऐसे में डाल सकते हो, इसलिए मैंने आपसे शेयर करा स्पेशली। ओके, यू कैन पुट दैट। ओके, some people say that the best solution to make the world simpler is to live a life without technology. Do you agree or disagree? Yes, I think Naman will answer. Naman, do you think that living a life without technology is the best solution to the world's environmental problems? Okay, this is the question. No, ma'am, because there is no technology in. Ma'am, can you repeat the question? Yes, some people say that the best way to solve the world's environmental problems is to live a life without technology. Without technology, there is no life, because everyone there are so many people are working work from home because of the COVID lockdown scenario, and they will be work with their computers and internet, with the help of internet. So you know, Naman, the question is that the best way to solve the world's environmental problems, because technology is harming the environment, the gadgets we are using are harming the environment. Yes, ma'am. So you can think on those lines. That technology, but you know, yes, technology is harming the environment, but the best way to solve those problems is not to live a life without technology. In fact, we should use technology to remove or sort out those problems. अब देखो, yeah, with the help of solar panels, environment damage होता है, पर अब जो नए AC आ गए, नई technology वाले, yes ma'am, yes ma'am, they are 5-star ACs and they are inverter technology use करते हैं, they are not harming to that extent. Yes ma'am, there are so many solar electricities, solar panels, they installed over the roof, and they become they use the ACs and power, generate the power. Yes, so you can say that living a life without technology is not the way.
you know, Yes, ma'am. to solve the world's environmental problem. In fact, we should use technology to Simplify sort of- short out the environmental problems. Yes. Yes. ma'am. ma'am. Yes. Green power. Yes, green power should be used. Yes, ma'am. Yeah. Okay. What are the advantages and disadvantages of cell phones in the hands of children? Okay. So first we'll talk about the advantages of cell phones in the hands of children. Okay. And who will speak? Cell phones in the hands of children. Deepak. Can I? Yes, हाँ बिल्कुल आ गए आओ हरी कौन बोला था कहना है मैं भी बोला था. हाँ जी बोलो बोलो कोई Ma'am, nowadays children are more using the mobile phone, and it has improved their learning skills very much. They learn alphabets much better than the older days. Moreover, they learn about many things like how to pronounce certain words, and the colors are better understood. Yes, all these are correct, but you know, children, in the hands of children, going 5th, 6th, 7th standard children, mobile phones in the hands, these points are correct. But सबसे पहला point ये लिखो, advantage अगर बोल रहे हो, advantage बोल रहे हो, तो उसमें लिखो कि parents के साथ connectivity रहती है all the time. They can always tell their parents if they are getting late, or that is safety and connectivity. Okay, then your point learning and all. You also need to prioritize your points when you write essays. Speaking में सब चलेगा. Speaking में आपने जैसे बोला है बहुत अच्छा आंसर है. Okay, but we are killing two birds. Okay, and when you write an essay, remember one thing: always learn how to prioritize your points. What point should be given more importance? So rough page पे पहले 2-3 मिनट लगा के अपने सारे point jot down करो. Then pick and choose the most important point and put them in your essay. Okay, and first number पे the most important point जो आपको लगता है. Okay, you will have to use your discretion for that. Okay. Okay, ma'am. Okay, what again do- I'll be muting all. excuse me, Another ma'am. point we can add that. एक minute, I had to mute you, so please unmute and ask, please. Ma'am, excuse Yes. me. What do you mean by that jot down? You said ना, उसका क्या meaning था? Jot down, note down. Jot down का मतलब है note down. Okay, JOT. not down. Note down. Okay, okay. Jot down. Spellings, ma'am. JOT, jot down. मैम Okay. हम स्क्रिबल तो नहीं लिख सकते ना? स्क्रिबल स्क्रिबल भी लिख सकते हो. जब आप तेजी में कुछ एकदम से जॉट डाउन करते हो उसको स्क्रिबलिंग ही कहते हैं. आप बहुत हैंडराइटिंग का ध्यान थोड़ी रख रहे हो उसमें. यू स्क्रिबल डाउन थिंग्स. मैम वो सही रहेगा ना वर्ड? हाँ बिल्कुल सही रहेगा. बोलने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. Okay. And we can also say the best advantage of having mobile phone in the hands of children is that they get more familiar with the technology, and it helps to influence their intellectual levels and another. Yes. And sharpen their mind. Yes. They can also, you know, send their homework to their teachers, and even without the internet, phones can be used for many purposes in the hands of children. ठीक है? So connectivity वाला point सबसे पहले लिख के फिर learning वाला education में help वाला सब डाल सकते हो. Now tell me, what are the disadvantages of cell phones in the hands of children? Hi, Parminder. Yes, Parminder. Hello, ma'am. Well, I believe there are disadvantages. First and foremost is that children neglect their studies. They forget their eating, their physical exercise. Apart from this, many children start using mobile phone as a source of entertainment. They start using games, playing game, and many other apps which are not beneficial for them. For example, my nephew started playing PUBG, and he got so much addicted that he was suffering with the sleeping disorder. So also, I saw him that as soon he wake up, he start playing the PUBG in the morning. So I think mobile phones become an addiction to the children. So although mobile phone are very beneficial to some extent, parents should definitely supervise their children what they are doing. Yes, that is very good. Yes, very good.
So parents should supervise, because children will use it. They will get addicted to the use of phone. Either they will play games on it, or they will do chatting on the social networking sites. They will not use it for the right purposes. Okay, because children are children. They don't know what is good or bad for them. So they have to be supervised. So disadvantages can become less if they are supervised well. So now you can speak on this essay also. Some people say mobile phones are good in the hands of children. Other people say they are having a problem. Okay, now I'm coming to one question. This is an academic essay question, but this has troubled many students, because when they get this essay, now this same question can be asked to you. Leisure is a growing industry. मेरे को ना एक बार एक स्टूडेंट ने आके बोला कि मैम मेरे को ये क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ नहीं आया, आई कुडंट स्पीक, और मैंने बाकी स्टूडेंट्स को बोला कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपकी बुक में एक एस्से है, वो एस्से आपका गेस्ट वर्क है, और अगली बार वो एस्से आया हुआ था. ओके, so speaking, follow-up questions and writing are really, inextricably linked with each other, right? When you will do ideas for speaking, you will do ideas for your essays at the same time, right? Now the question is, do people entertain themselves less because modern technology has made them be less creative? Do you think people are entertaining themselves less because modern technology has made them less creative? No, ma'am. Answer. Naman? Prince? Yes? No, ma'am. Yes. नहीं, entertain तो ज्यादा कर रहे हैं वो अपने आप को आजकल, because they use social media, and they use social media. No doubt they don't play outdoor activities, but they use social media, they listen to music, and entertaining ज्यादा है, इससे आगे नहीं है. Okay, आगे. मैम may I yes. तो कहीं पे जाना नहीं पड़ता मैम एंटरटेनमेंट के वास्ते. मैम वो डिपेंड हो जाते हैं टेक्नोलॉजी पे. एंड okay, now you are saying that people are not entertaining themselves less. ये बोल रहे हो ना आप? Now look at the essay question. I am going to speak out the essay question as it is there in the book. Okay, leisure is a growing industry. अब ये essay question है, leisure is a growing industry, but people no longer entertain themselves as much as they used to, because the use of modern technology has made them less creative. Do you agree or disagree? अब क्वेश्चन कह रहा है कि लोग उतना एंटरटेन नहीं कर रहे हैं. लोग, वो क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं रहा है कि एंटरटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. आप बोल रहे हो ना एंटरटेन तो ज्यादा कर रहे हैं. अब क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं कर रहे हैं. अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. Leisure is a growing industry, but people no longer entertain themselves as much as they used to, because the use of modern technology has made them less creative. Do you agree or disagree? Now, see, the question is saying they are not entertaining. आपको इसमें ये नहीं कहना कि entertain कर रहे हैं, पर अगर कहना भी है तो उसका तरीका आपको ढूंढना है कि आपको कैसे ये बात कहनी है कि इनफैक्ट लोग तो entertain कर रहे हैं. क्वेश्चन ही गलत है, आप ऐसे लिखोगे फिर. You get my point? अगर ऐसे आ गया, वैसे तो आप बोल दोगे कि नहीं जी entertain ज्यादा कर रहे हैं, घर में बैठे कर रहे हैं. होंगे ना? Pardon? Disagree होंगे ना? I couldn't get what you said. Ma'am, disagree. Disagree. Okay, so you will disagree and you will say that modern technology has not made people less creative. And second point of disagree will be, in fact, people are in fact entertaining. और ऐसे क्यों कह रहा है कि they are not entertaining? Because जो वो entertainment कर रहे हैं वो visible नहीं है बाहर. That entertainment is there within the walls of their home. Earlier people कैसे entertain करते थे? बाहर निकलते थे, खेलते थे, outdoor games करते थे, और लोगों के पास बैठ के गप्पे लगाते थे. वो entertainment होती थी. अब लोग घरों के अंदर entertainment कर रहे हैं, तो बाहर ऐसे लग रहा है कि आजकल लोग entertainment नहीं कर रहे. You get my point? So सबसे पहला उस essay में point बनाओगे. First paragraph will be that technology has not made people less creative, or because of technology, it is not that people are entertaining less. Technology has just changed the definition of leisure. The leisure we do today, we enjoy today, is within the four walls of the home. It is not visible outside. Then you can give example of the
टेलीविजन अंदर बैठे बैठे देख रहे हो और एंटरटेनमेंट है. यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर गेम्स, अंदर बैठे खेल रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो. सो ये नहीं है कि लोग एंटरटेन कम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की परिभाषा बदल गई है. एंटरटेनमेंट दिख नहीं रही है बाहर. यू गेट माय पॉइंट? यस यस. मैम इसमें हम मिथ वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये मतलब गलत इसके लिए बोला गया है करके. MYTH. You can say yes, Kajalba, very good. You can say that statement itself is flawed. Flaw, FLAW, flaw means इसमें त्रुटि है statement में, क्योंकि आजकल एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रही है, पहले से ज्यादा हो रही है. सिर्फ एंटरटेनमेंट बाहर दिख नहीं रही है. और आप एक और बात कह सकते हो कि आप किसी भी ऐसे सेंटर्स पे जाओ, you go to these लेजर सेंटर्स क्या होते हैं, फन पार्क्स, इनमें जाओ. जैसे हमारे घर के पास हार्डीज वर्ल्ड है या वंडरलैंड है, इनमें जाओ तो इनमें पैर रखने की जगह नहीं है. इसका मतलब लोग तो जा रहे हैं ना वहां पे भी. तो स्टेटमेंट वैसे भी फ्लॉड है, बिकॉज लोग जा रहे हैं आजकल. चलो ये जो टाइम आ गया है कोविड पैंडेमिक का, कोरोना पैंडेमिक का, इसमें नहीं जा रहे उतना, पर वैसे तो लोग बहुत निकल रहे हैं बाहर. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी. और फिर मैंने ये लिखा है कि अगर हम लेस क्रिएटिव हो भी गए हैं, अगर हम लेस एंटरटेनमेंट कर भी रहे हैं, अगर हम मान के चले कि चलो अब स्टेटमेंट सही है और कह रहे हैं कि लेस एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अगर हम ये भी मान के चले तो भी टेक्नोलॉजी इज नॉट टू ब्लेम फॉर दैट. टेक्नोलॉजी ने तो हमें इनफैक्ट ज्यादा टाइम दिया लेजर के लिए. अगर हम 1 घंटे में कपड़े धोते थे पहले घर के, अब वो 5 मिनट लगते हैं मशीन में डालने के लिए, बाकी काम मशीन कर रही है. अगर हम कपड़े सूखने डालने जाते थे ऊपर और फिर उतारने जाते थे, उसको आधा घंटा लगता था. अब ड्रायर मशीन में डालते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते इस काम के लिए. ठीक है. अगर हम बर्तन धोने में 1 घंटा लगाते थे, तो डिश वॉशर्स में अब 5-7 मिनट में बर्तन टिकाओ और फिर बाकी काम डिश वॉशर कर देता है. तो टेक्नोलॉजी ने तो हमें ज्यादा टाइम दिया लेजर का, पर हम उस ज्यादा टाइम में लेजर नहीं कर रहे हैं, हम उस टाइम में और ज्यादा काम कर रहे हैं. तो ये किसकी गलती है, टेक्नोलॉजी की कि हमारी? हमारी. मैम ये ऐसे बुक में है. हाँ यस से बुक में है, एकेडमिक बुक में है. मेरे ख्याल 367 नंबर है, आप देखना. Leisure is a growing industry, but people no longer entertain themselves as much as they used to, because the use of modern technology has made them less creative. Do you agree or disagree? And believe me, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को ऐसे उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, has technology made people less creative? You can say, is it true that because of technology people are entertaining themselves less? तो आप उसका आंसर उसमें में जो मर्जी दोगे, बोलने के लिए चल जाएगा. But when you look at the question of the essay, then you have to make a plan and you write an essay. So all these points will help you. तो आज मैंने technology touch कर रही हूँ आपके साथ. Most of the essays we did today are related to technology. Most of the follow-up questions we are doing today is because of technology, related to technology, right? मैम. Yes. मैम इसमें ये भी बोल सकते हैं क्या दैट क्रिएटिविटी का पॉइंट करके दैट दे आर बिकमिंग मोर क्रिएटिव. वो जो अंदर का जो उन खुद को नहीं पता था कि दैट वी हैव दिस टैलेंट, दे आर बिकमिंग somebody is becoming more good photographer. वो लोग क्लिक करते हैं फोटोग्राफी, then somebody making videos, they are becoming. You know what you couldn't learn earlier, जो आप कभी सीख नहीं सकते थे, टेक्नोलॉजी आपको सिखा सकती है ना. Right, they are making videos, so they are becoming क्रिएटिविटी तो बढ़ रही producers. है, क्रिएटिविटी तो बढ़ रही है. मेरी कोई हॉबी है, whatever hobby I have, because of technology I can learn that, और मैं उसको और ज्यादा अच्छी चीजें बना सकती हूँ. टेक्नोलॉजी सिखाती है बहुत कुछ. ठीक है. तो आप ये भी पॉइंट डाल सकते हो. वेरी गुड पॉइंट कि टेक्नोलॉजी ने इनफैक्ट ग्राफिक्स ज्यादा बनाया है. ठीक है. मैम ऐसे लिख सकते हैं भी स्किल डेवलप होती है टेक्नोलॉजी की हेल्प से. वही तो मैं कह रही हूँ, स्किल डेवलप होती है. मेरे को स्टिचिंग का शौक है, मैं स्टिचिंग कभी कर नहीं पाई बिकॉज मैं कभी बाहर जाके किसी से सीख नहीं पाई कटिंग एंड टेलरिंग. बट टेक्नोलॉजी, यूट्यूब वीडियोस पढ़े हैं, जो मर्जी कर लो घर बैठ के. ठीक है. यस मैं ना जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ, पहले मुझे सिंपल आती थी, लेकिन ये यूट्यूब की मदद से मैंने अच्छी तरह सब कुछ सीख लिया. कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? रमन. रमन, कोई बात नहीं रमन, मैं ला रही हूँ तेरे पास कुछ सिलने वाला. ठीक है. दे देना. कोई बात नहीं. हम कैसा भी, कोई भी दे देना. हाँ क्या दे दूँ? कोई भी दे दो, मैं सब कुछ सी लेती हूँ. Oh really? Good.
मैम रमन को हमारे भी ले लो, हमारे टेक्नोलॉजी भी के ले लो वजह मैडम, हाँ हमारे सच्ची भी है ना। हमारे भी। हाँ यार रमन एग्जाम को के बाद टेक्नो देना, लेकिन एग्जाम के बाद रमन आप भी देना। खरीद लो और आप ही बना दो और कोरियर कर दो, सब पेमेंट कर देंगे हम। मैम एक और एडवांटेज देखो, टेक्नोलॉजी की वजह से रमन को एक जॉब भी मिल गया। Yeah, really. So ये है, this is a fact that technology has made people much more creative. ये भी आप point डाल सकते हो, skill develop हो सकते यस मैम, मैंने पेंटिंग भी ऐसे ही सीखी है। मैंने ना 3D origami, I first बड़े साल पहले I downloaded a book on 3D origami. उसमें मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं बनाऊं कुछ, but I failed. और मैंने ना I gave up, नहीं होगा, it's very difficult. फिर then once I had gone to US, तो मेरे पास टाइम था वहाँ पे, मैंने ये YouTube वीडियो खोला, 3D origami swan बनाया, पेपर का बनता है बिल्कुल, and nothing, no cost. तो मैंने सबसे पहले, मेरे को लगा कि मैंने खराब ही करना है, मैंने पुराना मैगजीन पेपर लेके उसका बनाया, बहुत ब्यूटीफुल बना स्वान। फिर मैंने सही पेपर लेके A4 साइज इनके बनाए। सो दिस 3D origami is really very creative and nice thing. So creativity बढ़ती है, skill development होती है, yes, you can write any of these things, yes. अब आपका essay अच्छा बनेगा, बुक में से देख लेना, okay? Now there is another essay in the book of general training students. This is, some people think that mobile phones are more useful for their professional life, whereas others think mobile phones are most useful in their personal life. मैम कितना नंबर है जी बुक दे विच? I think 107 GT book. Okay. Okay. So what are the advantages of mobile phone in the personal life and what are the advantages of phone in the professional life? So let any GT student answer these questions. ओके, जीटी स्टूडेंट्स में से आप अपने आप आ गया, ओके, जो बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, कुछ बोलो। यस, एनीबॉडी? कोई, मेरे को पता नहीं चलता कौन बोल रहा है, तो कोई भी आके बोल, शुरू करो आंसर। इज टेक्नोलॉजी मोर हेल्पफुल इन द, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पर्सनल, मोबाइल फोन्स इन पर्सनल लाइफ? What are the advantages of mobile phones in personal life? Yes. There are various advantages in personal life. Yes. We learn so many things from technology. We learn so many skills on technology. I'm talking of mobile phones. Yes, you can talk of technology, but through mobile phones. Mobile phones की बात होती है. It is easy to communicate with the family members as well as. Yes. Very good. May I? Yes, I have one point. Initially we used to go out for matrimonial sites के लिए. Then to nowadays we are getting sitting at home. People from many different countries, we are getting one person, which is very best for us. Yes, so they're coming across people who are good for them for lifelong connection. Yes. पर्सनल लाइफ में कनेक्टिविटी बढ़ गई है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सेकेंडली, इट सेव्स टाइम। आप जब जॉब के लिए जाते हो, 1 घंटा ट्रेन पे जा रहे हो, मेट्रो पे वापस आ रहे हो, तो आप रास्ते में से ही अपने फोन के थ्रू सारे, कोई बिल पेमेंट है, कोई ऑर्डर देना है, सब कर सकते हो ना। यू कैन सेव फैमिली टाइम। पर्सनल लाइफ में फायदा हो गया, लॉकडाउन में एग्जांपल दे सकते हैं, उनका मैम कनेक्शन नहीं है ज्यादा। पार्डन मैम, जैसे लॉकडाउन के एग्जांपल दे सकती है कि अलाउड नहीं है ज्यादा रिलेटिव्स ऑन वेडिंग, तो ऑन फोन वी कैन अटेंड दिस मैरिजेस। हाँ, आप आज का एग्जांपल दे सकते हो। और yesterday I came across a video, a very gala wedding was taking place somewhere, and the district magistrate had to come and उन सबको लॉकअप में डलवा दिया। मैंने भी देखी है मैम ये। मैं इवन मैम yesterday I attended the marriage of my cousin sister. हाँ, too bad ना, बेचारी। It was in Tripura, ma'am. This incident happened in Tripura. Tripura? She is in Toronto, and so okay. Only 10 family members are allowed over there. हाँ, only 10 family members are allowed anywhere now. और 10 तो अपने घर के ही हो जाते हैं ना, तो बाहर का किसी को क्या बुलाना है फिर। घर के ही है मैम। यस हाँ, यस, इवन मैम घर के भी सारे नहीं आ सकते ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो फिर आप एक को भी नहीं बुलाते हो कि सारे बाकी नाराज हो जाएंगे, चलो छोड़ो। 4 जने ही कर लो शादी, 2 जनों की शादी, 2 मम्मी पापा इधर से, 2 उधर से, चलो 6 जने, शादी हो गई। ठीक है। पर मैडम जीजा जी को तो बुलाना ही पड़ता है ना। मनी भी सेव होती है। 2 जने इम्पोर्टेंट है, जीजा जी और फुफ्फड़ जी।
मैम ये बात। हेलो, हाँ हाँ जी, मनी भी सेव होती है इससे, मनी सेव होती है, खर्चा नहीं होता। हाँ ये Ma'am, बात we can also click photos on mobile phone and हाँ. keep it saved in our memories. Yes, so personal life में ये फायदे. So now what are the advantages of mobile phones in professional lives? मैं वो कनेक्ट रहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, मींस मैं आपका जो प्रोफेशन है वो सफर नहीं करता, ठीक है। अगर आप घर को टाइम दे रहे हो तो प्रोफेशन सफर नहीं करता। यू कैन बी कॉल्ड बैक एट एनी टाइम। जब मेरे पास सेल फोन नहीं था, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, यू नो। अब मैंने चाहे प्रैक्टिस बंद कर दी है, बट बेसिकली आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। आई प्रैक्टिस गायनेकोलॉजी फॉर अराउंड 33 years ऑफ माय लाइफ, ठीक है। अब मैं कोई केस, डिलीवरी केस है, तो मैं 5 मिनट के लिए भी घर नहीं जा सकती थी कि मेरे केस अगर रेडी हो गया, मैं घर से नहीं आ पाई, मैं नहीं, मेरे को कोई बुला पाया, तो मेरा केस सफर करेगा। आई हैड टू सिट देयर, आई कुडंट गो होम। बट प्रोफेशनल लाइफ में अब ये भी है कि आई कैन गो होम एंड देन कम बैक व्हेन नीडेड, ओके। सो मैंने वो टाइम भी देखा हुआ है व्हेन देयर वर नो सेल फोन्स एंड वी कुडंट गो एनीवेयर लीविंग द पेशेंट बिहाइंड, ओके। एंड ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में फायदा हो गया ना, कि आप प्रोफेशन को भी ध्यान दे पा रहे हो, पर्सनल लाइफ को भी ध्यान दे पा रहे हो। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द, आप अपने व्यू में लिखना, ये डिस्कस बोथ साइड्स कैसे है, अपने व्यू में लिखना दैट द लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ हैज थिन्ड डाउन, ओके। मैं इमरजेंसी कंडीशंस में भी सिचुएशन में in a professional life it also saves time, like I visit any particular place, you can book a particular taxi, and the use of map, yes, that can it saves time. go a And particular also, destination. yes Hardik, it's a very good point. You can do video conferencing with all the staff members at the same time, with all the, yes, हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं अपना मोबाइल फोन में। yes, yes. Ma'am, we can say that balance is maintained. Work from home example. And yes, you can give work from home example. Yes, okay. Ma'am, So again ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, okay. किसी भी वार्ड में या फिर हम कहीं काम करते हैं तो एक इजी वे है कि हम ग्रुप बना सकते हैं, तो उसमें भी हम कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज होता है जैसे वार्ड का, तो हम लोग मैसेज कन्वे कर देंगे दूसरों को भी। yes, okay. मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ डिस्टरबेंस है, ठीक है। किसी के पीछे है, मैं सबको म्यूट कर दिया। Now one person will unmute as and when you have to speak. See, there is an essay. People are interacting with each other in different ways. Are the advantages more than the disadvantages? People are interacting in different ways. तो आपने ये मोबाइल, ये जो इंटरेक्ट करने का वे बदल गया, क्या इसके फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा हैं? तो यहाँ पे आपने while there are a few disadvantages, overall the advantages are much more करके फिर आपने few disadvantages में face to face interaction कम हो गया है, और ओवरऑल में सारे जो ये फायदे आपने बोले हैं वो सारे आपने बोलने हैं। ये ऐसे भी आपका हो गया एक तरह से कवर। आप लिख लोगे ना इस पे अगर आ गया? Yes ma'am. Yes. Okay. Then we have this, there are so many other essays, okay. ये मैं सारे essays के topics बोल रही हूँ जो similar essays आए हैं on based on this technology, mobile technology and communication technology, and let me know कौन से essay के points अभी आप हमने नहीं करे, फिर हम कर लेते हैं, okay. I'll speak out these essays. More and more people are using mobile phones and the internet to communicate. Therefore, people are losing the ability to communicate face to face. Do you agree or disagree? ये academic book ऐसे है 371 नंबर का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट फेस टू फेस खत्म हो रही है। तो आप इससे एग्री करोगे कि डिसएग्री करोगे? Yes, Sapna, Dr. Sapna, are you there? Shaina, will you speak? Yes ma'am. Yes. So do you think the ability of people to communicate face to face is going down because people are using mobile phones and internet? Yes ma'am, I think they lose their face to face interaction is reduced. मेरी बात सुनो शाइना, मेरी बात सुनो, फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो रहा है ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रही है कि लोगों की जो एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की फेस टू फेस वो कम हो रही है। मैंने तो इसके साथ डिसएग्री करा है कि एबिलिटी कम नहीं हो रही, लोग कम इंटरेक्ट कर रहे हैं फेस टू फेस, पर एबिलिटी कम नहीं हो रही। करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ जी,
है ना, एबिलिटी कम नहीं हो रही है. इनफैक्ट पीपल कम्युनिकेट ज्यादा कर रहे हैं, पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन की एबिलिटी कम नहीं हो रही है. वो नहीं कर रहे हैं, वो उनकी अपनी मतलब विश है, ठीक है, पर एबिलिटी कम नहीं हो रही है. एबिलिटी वर्ड पे ध्यान देना है ऐसे में, अगर ऐसे में ऐसे लिखना है को आ जाए. ओके ओके. सेकेंड क्वेश्चन देखो. Mobile phones and the internet play an important part in the way in which people relate to one another socially. Is this a positive or a negative development? लिख लोगे? Excuse me, ma'am. Yes. Could you repeat the first point? No, I missed. Mobile phones and the internet play an important part in the way which people relate to one another socially. Is this a positive or a negative development? तो social interaction का way change हो गया है because of mobile phones and internet. क्या ये positive है कि negative है? लिख लोगे ना? Points तो हो गए discuss. Okay, ma'am. Okay. The development of technology changes the way people connect to each other. In which way does the development of technology change the type of relationships that people make? Does it have a positive or negative effect on relationships? You can write this essay also now. So many points we have discussed related to these things. Okay, ma'am. Direct question essay. Okay. Some people believe that technology such as mobile phones has destroyed social interaction. Do you agree or disagree? GT book essay 188. Okay. ये भी आप कर लोगे. The rapid development of communication technology such as smartphones, tablets, and other mobile devices has more disadvantages than advantages. Do you agree or disagree? Disagree. Okay. अब आपने ना ये ऐसे देखो, ये वेरिएंट है agree disagree वाला. वेरिएंट वर्ड मैंने यूज करा था when I made you do. अब देखो इस क्वेश्चन में ना you cannot go one sided. Okay. ये कह रहे हैं कि जो रैपिड डेवलपमेंट हुई है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस से ज्यादा है. क्या आप सहमत हैं कि नहीं? अगर आप सहमत हैं तो बोलोगे डिसएडवांटेज ज्यादा है और एडवांटेज कम है, तो भी आप दोनों लिखोगे ऐसे में. अगर आप डिसएग्री करोगे तो आप लिखोगे कि एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज कम है, तो भी आप दोनों लिखोगे. ये समझ आ गई वेरिएंट वाली बात? सिर्फ एग्री डिसएग्री में भी यू कैन नॉट गो वन साइडेड. ओके. अगला ऐसे है, some people have benefited from modern communication technology, but some people have not benefited from it at all. To what extent do you agree or disagree? आप इसे एग्री करोगे कि डिसएग्री कि कुछ लोगों ने बिल्कुल बेनिफिट नहीं करा इस टेक्नोलॉजी से? डिसएग्री करो. और जिनके पास नहीं है उन्होंने भी बेनिफिट करा है किसी ना किसी तरीके से. ठीक है. Mobile phones and the internet could have many benefits for old people. However, this age group uses technology the least. What are the benefits for old people of using mobile phones and the internet? How can we encourage them to use this new technology? ये ऐसी बुक है 375 नंबर का. ओल्ड पीपल इसको नहीं यूज कर रहे. ओल्ड पीपल को टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है और हम लोगों को कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यूज करो. अब ये सारे एसेज इन ए वे हमने डिस्कस करे. ओल्ड पीपल के लिए ये बेनिफिट है. आप प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. Calling emergency services. हाँ, emergency services में है. हेल्थ चेकअप कहीं से करवा सकते हैं. Yes, this is 375 in the academic essay book. 375 number essay. ठीक है. Okay. Now this is another question. Essay question. I'm going to speak two questions. There's a slight difference in handling the two questions, and you may get these questions in the speaking also. Okay. The use of mobile phone is as antisocial as smoking. Smoking is banned in certain places, and so mobile phones should also be banned. To what extent do you agree or disagree? Okay. The use of mobile phone is as antisocial as smoking. Smoking is banned, and so mobile phone should also be banned in public places. Do you agree or disagree? Disagree. Disagree करो कि मोबाइल फोन जो है उसको बैन नहीं करना चाहिए. स्मोकिंग का बैन क्यों जस्टिफाइड है, एक पैरा उसका बना दो. और मोबाइल फोन्स का बैन क्यों नहीं जस्टिफाइड है, एक दो पैरे उसके बना दो. And your answer will be there. Smoking का बैन क्यों जस्टिफाइड है? Compare it with the mobile phone का बैन. Smoking का बैन क्यों justified है? Ma'am, when we write this kind of essays, this negative point we will write in the first para or the last para? What ऐसे it doesn't matter actually, but you know जो negative point है जिसके लिए आपने कम point देने हैं उसको पहला बना के ना and admittedly करके second however से शुरू करके ना दो पैरे बनाओ. Okay, ma'am. Okay. That is a better placement, easier. से शुरू करना है. Yes.
So smoking, why is the ban on smoking justified? One मैम of you will answer स्मोकिंग it. इसलिए बैन करनी चाहिए क्योंकि जो स्मोकिंग कर रहा है उसको तो हार्मफुल है ही है, और उनके जो इन्वायरमेंट में साथ में उनको ज्यादा इफेक्ट करेगी। Shaina, can you speak Yes, that out in English? active or passive smoking. Shaina, can you speak that out in English? Yes, ma'am. Yes. Smoking is also harmful for those that people who smoke, but they also harmful for others. Which those are surrounding of that people of that person. So in such a sentence, you will use not only but also. Smoking is Yes. not only harmful to the smoker, but also to the person standing nearby. Okay. Yes. So, Yes, ma'am. so a ban on Okay. smoking is justified. Ban on cell phone is not justified because cell phone doesn't harm the person standing near. Okay. Yeah. Yes. But then there is disturbance. तो cell phone का ban नहीं, cell phone का judicious use advocate करना चाहिए. Smoking का तो ban justified है. Okay. मैम इस ऐसे में हम वन साइडेड नहीं जा सकते. आप कह सकते हो कि वन साइडेड जा सकते, वन साइडेड ही गए हो ना कि बैन ऑन स्मोकिंग जस्टिफाइड नहीं है, वन साइडेड ही है, वन साइडेड ही है आप, पर आपने ये कहा है कि स्मोकिंग का बैन जस्टिफाइड है, फोन का बैन नहीं जस्टिफाइड, आपने डिसएग्री करा है. ओके मैम. ओके मैम इसमें क्वेश्चन में एंटी सोशल का मींस क्या हो रहा है? The use of mobile phone is as anti social as smoking. Anti social होता है जो भी चीज सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है, सही नहीं है, सोशल नहीं हो, एंटी सोशल. एंटी सोशल. ठीक है, तो मोबाइल फोन भी ऐसा ही एंटी सोशल है. वो कहते हैं मोबाइल फोन में भी तो लोग जैसे कहीं हॉस्पिटल गए ऊंची ऊंची बात करते हैं तो वहां पे भी तो नुकसान हो रहा है किसी का, लाइब्रेरी में यूज करते हैं या गुरुद्वारे मंदिर में ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए ना. लोग गुरुद्वारे मंदिर क्यों जाते हैं? टू गेट पीस ऑफ माइंड, लिसन टू द हिम्स एंड चैंट्स एंड यू नो, ऊंची ऊंची किसी की फोन की बातें सुनने नहीं जाते हैं वहां पे. लोग यूज करते हैं फोन, तो वो गलत है, एंटी सोशल एक्टिविटी है एक तरह से. Taking videos without consent. हाँ, taking videos without consent. But वो ही ना, use of mobile phones should be banned. तो आपने लिखना है कि स्मोकिंग का बैन जस्टिफाइड है, इसका नहीं जस्टिफाइड. आप कह दो हाँ ये भी बैन करने चाहिए, तो बिल्कुल आप एग्री कर जाओ कि जैसे स्मोकिंग का वैसे ही सेलफोन है, इसका भी बैन करो. अपने अपना 250 to 300 वर्ड्स का आपका पैरा बन जाए, ऐसे बन जाए, गुड एंड वेल एंड गुड. Whatever you say, you should be able to justify it. ठीक है. हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूल्स इम्पोज करनी चाहिए मोबाइल फोन यूज करने के लिए इंस्टेड ऑफ. हाँ, ऐसे कर सकते हो कि रूल्स होने चाहिए, लोगों को जुडिशियली यूज करना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए. ठीक है, यू कैन से लाइक दैट. ठीक है. ओके, फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द यूज ऑफ सेल फोन्स? Radiation. Yes, infrared rays, radiation जैसे बोलो, infrared rays बोलो better है. ठीक है, which directly affect the body part exposed to. Animals. Eyesight weak. Yes, too much use. Okay. Dictation. Yes. Electronic waste. It can also take away the privacy and peace of mind. It can distract other people. Okay, like that. You can. Children also distract from their studies. Yes. Okay. Now there is another question. There are social, medical, and technical problems associated with the use of mobile phones. What forms do they take? Do the problems of mobile phones outweigh the benefits? अब इसमें ना social, medical, and technical problems है. And एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है what forms do they take? मतलब क्या क्या social problems है, medical problems है और technical problems है. और आपको ये पूछा गया है कि वो क्या प्रॉब्लम्स है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये प्रॉब्लम्स बेनिफिट से ज्यादा हैं. तो मैंने ये लिखा है सोशल प्रॉब्लम्स एंड मेडिकल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स की मैंने 2 पैरे बना दिए हैं. एक पैरा सोशल प्रॉब्लम्स का, एक मेडिकल एंड टेक्निकल का, एंड द थर्ड पैरा मैंने कह दिया कि बेनिफिट्स ज्यादा है इन प्रॉब्लम्स से. ठीक है, और फिर मैंने बेनिफिट्स लिख दिए, क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लम्स ज्यादा है बेनिफिट से लिखती हूँ तो फिर और प्रॉब्लम्स लिखनी पड़ेंगी ना. तो मैंने बेनिफिट ज्यादा लिख दिया, तो मेरा ये पैरा एक बेनिफिट्स का बन गया, प्रॉब्लम्स तो पहले ही लिखी हुई हैं. ठीक है. सो हाउ विल यू हैंडल दिस essay? What are the social problems? One of you will tell me what are the social problems with the use of mobile phones. मैम फैमिली बॉन्ड वीक हो रहा है. बिल्कुल ठीक है. वो सोशली रहते हैं.
खाने के टेबल पे भी बैठे हैं ना, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर हर परिवार में ऐसा होगा जिसके हाथ में सेलफोन है, उसको कोई मतलब नहीं है उसके साथ कौन बैठ के खाना खा रहा है, उसको अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करने हैं और कुछ और करना है साथ के साथ। एम आई राइट? यस मैम। और उनके वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में वो जो लाइन है वो ड्रॉ नहीं कर पाती। बिल्कुल सही है, because you know all the time they can be called back to work, they cannot draw a line. Very good. What are the medical and technical problems? हमने अभी बात करी है, in infrared rays, मेडिकल and excessive use mental health disturb कर सकता है। फिर मैंने एक पॉइंट ये लिखा है, increased touching of the cell phones can harbor germs on the handset which can lead to diseases. ठीक है, फिर अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है, नेटवर्क कवरेज नहीं होती कहीं पे और फोन को इधर उधर ले जाके चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे कवरेज है, कहाँ से बात होएगी, ठीक है। एंड देन चार्जिंग इश्यूज आ जाते हैं कई बार, अनवांटेड कॉल्स हैं, ऑल दीज आर टेक्निकल इश्यूज, ठीक है। फिर एडवांटेजेस का पैरा बना के कह दो, एडवांटेजेस ज्यादा है, ठीक है। Ma'am, social problem में there are many fake news, they viral, and the peoples and particular regions, religious they hurt. हाँ अच्छा, अब इस ऐसे की हैंडलिंग में ना एक प्रॉब्लम आ रही है, अभी मुझे बैठे बैठे ये ध्यान आ रहा है, 2 पैराज में मैंने प्रॉब्लम्स डाली हैं और फिर मैं एक पैरे में कह रही हूँ कि एडवांटेजेस ज्यादा है, तो बात नहीं बन रही है, समझ गए? हाँ, तो आपको फिर क्या करना है, एक ही पैरे में सोशल, मेडिकल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स डालो और 2 पैराज में फायदे डालो सेलफोन्स के, तब आपका ऐसे बेटर प्लान रहेगा, क्योंकि आप डाल रहे हो कि फायदे ज्यादा। मैम 4 पैराग्राफ्स में लिख सकती हैं, 1 में प्रॉब्लम्स और 1 में एडवांटेज। हाँ 4 पैराग्राफ ऐसे लिख सकते हो, फिर एडवांटेज के पॉइंट ज्यादा लिख के कह सकते हो एडवांटेज ज्यादा है। ओके मैम, ठीक है। सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग दिस एसे, ठीक है। ओके, टेक्नोलॉजी नहीं खत्म हो रही। ओके, नाउ वी कम टू एन एसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं ओरल में, ओके, फॉलो अप क्वेश्चंस में। So scientists believe that computers will become more intelligent than human beings. Some people think it is positive, other people think it is negative. Discuss both views. So computers becoming more intelligent than human beings, इसके लिए term पता है क्या है? Artificial intelligence, AI. Okay, अगर आपने पहले नहीं सुनी तो अब आपको पता होना चाहिए, this is AI, artificial intelligence. Okay, so computers becoming more intelligent than humans, is it positive or negative? This is your speaking question. Follow up. Bolo, Hari. It's positive in some way, but there should be a human supervisor. I mean, there should be a positive है तो positive वाले points बताओ. Advantages of AI बताओ. What are the advantages of AI? It can compute many complex mathematical solutions and reach some areas where humans cannot go. Very good. ठीक है, आप एग्जाम्पल पता है क्या डाल सकते हो कि जो कहाँ पे, जहाँ पे एक रेडियो एक्टिव डिजास्टर हुआ था, अभी भी रोबोट्स लगे हुए हैं वहां पे सफाई करने। मैम फुकुशिमा। Yes ma'am. फुकुशिमा। हाँ फ्यूकुशिमा है ना? Yes ma'am. एग्जाम्पल। ओके, एंड यू नो जब सुनामी वगैरह आई तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी रोबोट्स, क्योंकि देखो अदरवाइज, एंड यू नो दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन यू नो प्लेसेस, बॉम्ब डेटोनेटर्स जहाँ पे डेटोनेट करने हैं या कुछ है, वहाँ पे भी रोबोट्स को आगे भेजा जा सकता है। ठीक है मैम, ये सभी रिसेंटली यूएसए में मैम रोबोट डॉग्स अभी। हाँ बोलो मैम, 2 वर्ड्स आपका ही ऐसे था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पढ़ा था मैंने, एक जैसे इन्होंने बोला कि सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम्स को जो अभी तक एल्यूडेड है टिल नाउ ह्यूमन बीइंग्स फाइंड नहीं कर सके, एंड सेकंडली कैन हेस्टन आवर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। यस, कैन हेस्टन, टी साइलेंट है उसमें, कैन हेस्टन आवर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस टू अनइमेजिनेबल लेवल्स। ओके, बट मैम इट इज मैम AI means 24/7. Like all the time it is available, like so without any interruption. Yes, and, yes, we can, yes. sort out the problems. Yes. Then other than that, it is most quicker,
more smarter and more accuracy is there comparatively with the women. Yes. Because if we do a human being, so there are a little bit chances of problem or any technical problem. But on that side, it is more accurate. Means there is more accuracy there. So actual, जो actual true artificial intelligence है वो तो मेरे को नहीं लगता कभी आएगी, पर अगर आ गई तो it can play havoc with our lives. Okay. Job से खत्म हो जाएगी मैम, job से नहीं रहेगी. Jobs की बात छोड़ो, true artificial intelligence. आपने robot movie देखी है? Robot. Yes ma'am. तो कंप्यूटर और कंप्यूटर्स बना रहा है, रोबोट और रोबोट्स बना रहा है, पूरी आर्मी क्रिएट कर रहा है और फिर लोगों को तबाह कर रहा है. उसमें फीलिंग्स आ गई हैं. चिट्टी. मैम AI means artificial intelligence. AI means artificial intelligence. Okay. We can also include. मैम ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो ह्यूमन ने बनाई है. हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो अगर ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, अभी तो ह्यूमंस ने बनाई है, अगर ट्रू आ गई तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है. पूरी मेरे को ना 1 मिनट फिर सबको म्यूट करना पड़ रहा है. हाँ जी. अनम्यूट करके अब क्वेश्चन पूछो जिसने पूछना है. What are the disadvantages of AI? Let me have this answer. मैन पावर कम हो जाएगा. मैन पावर जो है फिर जो भी जॉब अवेलेबिलिटी है आउट ऑफ जॉब्स हो जाएंगे, कम हो जाएगी एंड unemployment rate increase. Autonomous weapons in the hands of wrong people can cause mass casualties. Retard the physical. हाँ ठीक है. Okay, टेक्नोलॉजी नहीं खत्म हो रही. Okay. Some people say that machine is very complex and a lot of difficult work is automated. Does machine automation have more pros or cons? ये भी एक essay है. Okay. Automation, machine automation, ये भी robots पे ही है ना ऐसे एक तरह से. तो दूसरा क्वेश्चन है, some people think that robots are very important to human future development while others think they are dangerous, can have negative effects. ये भी वही AI वाला ऐसे है. ठीक है. अब machine automation के positive effects बताओ. What are the positive effects of machine automation? Ma'am, surgeries में precision level बहुत high. It saves the time. Very good, Divya. That's very good point. It can save human lives. में वही point डाल दो. Mining, bomb disposal, sewage cleaning. Okay. Then Fukushima robots were employed. Healthcare में surgeries and robotic surgeries. Okay. I got an essay related to this automation. I have just put the same example of Fukushima there. Okay. And I got 7, ma'am. Oh, that's great. बहुत अच्छा. Okay. Then automation saves time, enabling people to enjoy and relax. Okay. And it ensures higher productivity because it reduces the labor cost and also reduces human error, chances of human error. Okay. So, you know what we have done today? We have done all questions related to technology as seen to the general training students, as seen to the academic students. And if you get any cue card related to, like there's a cue card, a mobile app in your phone, all questions will be related to technology. If you get a conversation, a phone conversation, still you will get all questions related to phone communication technology in your follow-ups. So you have covered a lot of follow-ups today and a lot of essay topics and ideas. Ma'am, what is Fukushima? What she said? Fukushima is the name, the place in Japan where robots are still being used to create, to clean the nuclear fusion disaster which happened over there. Can you spell that? Fukushima. Shima. Okay, ma'am. Thank you. Okay. You can check it out on Google. You'll come to know. Okay? Yes, ma'am. That's why I asked. Yeah. Spelling. So, how did you enjoy today's class? It was very beneficial, ma'am. Informative. So next जो discussion है speaking की, should we continue this way also and cover some other topics like this?
Yes, ma'am. Follow-up question. Which topics would you Yes, like ma'am. me to cover upon that day? Environment. Environment. Okay. So we'll cover up environment and tourism. Okay. There will be around 40 to 50 essays covered in one class. Today the class was of 1.5 hours, a very lengthy class, and we'll do one reading passage also now. Okay. Ma'am, today I got late notification of Zoom. I started at 10. I gave the notification at that time only. I Did don't you know. get any ma'am. personal notification? ग्रुप्स में तो टाइम पे गई है ना नोटिफिकेशन. Yes, ma'am. कौन बोल रहा है नेट लेट मिली है? Ma'am, I'm Jasveer का ma'am. जसवीर आप मेरे रेगुलर ग्रुप में हो नहीं हो? नहीं वहाँ नहीं हूँ मैम. हाँ तो फिर उस ग्रुप में तो मैं जनरली नोटिफिकेशन देती नहीं हूँ. वो तो आई डोंट नो हु गेव द नोटिफिकेशन थोड़ा लेट. ओके मैम. हाँ चलो. मैम न्यू क्यू कार्ड मई टू अगस्त का. चलो आप यहीं पे पूछ लो, यहीं पे मैं इसका जवाब दे देती हूँ. It is impossible for me to get hold of them before 7th or 8th of May. I may start getting them before that, पर पूरी compilation उससे पहले impossible है. ठीक है? अगर आपको कोई भेज रहा है तो वो fake भेज रहा है. Believe me, it is not possible for anybody to get hold of them before that date. Okay? तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो. आप सबको मैं पहले कराऊंगी. बट मेरे को लगता है नेक्स्ट क्लास में तो क्यू कार्ड्स ही डिस्कस होंगे जो नए आए हैं. ये टॉपिक्स तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ कि ये वाले टॉपिक्स मैं आपको कल करा देती हूँ, कल या परसों, एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म के. मैम जैसे शेयरिंग इन द ग्रुप 10th को मेरी स्पीकिंग है तो उसमें नए क्यू कार्ड आ सकते हैं फिर. 10th को है ना स्पीकिंग आपकी? 10th मई को पक्का नए आ सकते हैं. आपको करा देंगे उससे पहले. ओके. हाँ आपको करा देंगे. जितने हमारे हाथ लगे, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको मैं जितने क्यू कार्ड्स मुझे पता चलेंगे मैं आप सबको करा दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. वैसे कितने चेंज हो जाते हैं? 15 to 20 चेंज होते हैं, बाकी वही रहते हैं. पुरानी बुक कंप्लीट करो अच्छे से. ओके मैम अगर एंड ऑफ द अप्रैल है किसी का तो चेंज होंगे? मई वाले होंगे कि अप्रैल वाले ही होंगे? अप्रैल वाले, पर एंड ऑफ अप्रैल वाले अब यहाँ पे तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए ना, बिकॉज 29 का भी कैंसिल हो गया पंजाब में. तो ओके. तो अब तो मई वाले ही आएंगे क्यू कार्ड्स. बाहर मैम जिनका 8 पेपर हो रहा है, जिनका 29 को पेपर है, उनको अप्रैल वाले ही आएंगे. मैम 8 मई को मैं पेपर पेन वाला एग्जाम नहीं हो रहा, मुझे कोई ईमेल ही नहीं आई वेन्यू की. मैम नहीं अभी थोड़ी आएगी मेल. जिनका 24 को था उनको 23 को मेल आई थी कि नहीं हो रहा. ठीक है. और जिनका मेरे ख्याल 28 को है, 29 को है, उनको अभी तक मेल नहीं आई ना, नहीं हो रहा. नहीं आई. स्पीकिंग की नहीं आती. आएगी मैम कि नहीं आएगी? मैम 8 को राइटिंग रीडिंग कैंसिल हो गया और मैम 9th को स्पीकिंग है. अच्छा 29th वाला तो कैंसिल्ड है ना, पंजाब में कैंसिल्ड है. मैम स्पीकिंग और LRW मेरे ख्याल में तो सभी कुछ कैंसिल्ड है, बट कुछ बच्चों की स्पीकिंग हो रही है. दे आर गिविंग एन ऑप्शन कि अगर आपने करनी है तो कर सकते हो, वो कर लो. ऐसे कुछ है. मैम जिनको वेन्यू पहले आ गया उनकी हो रही है, जिनको वेन्यू नहीं आया उनकी. चलो आई एम हैप्पी दैट यू लाइक द स्पीकिंग सेशन. एंड काजलबा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. एंड मैम while sharing recording. हाँ Thank you, I'll ma'am. be sharing the recording. While recording उसमें हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं हेडिंग लाइक दिस वाज फॉर टेक्नोलॉजी एंड देन नेक्स्ट विल बी डूइंग फॉर एनवायरनमेंट, सो दैट व्हेनेवर वी नीड वी कैन पिक जस्ट दैट रिकॉर्डिंग अप. नो? Yes, I'll share. And do you want me to share this points file? जैसी भी है, बहुत अच्छी नहीं बनी हुई, but yes of course. मैम आप शेयर कर दीजिए. Yes ma'am. ठीक है चलो. Okay. Thank you ma'am. Okay then, bye. Thank you मैम. रीडिंग क्लास के लिए लेट हो गया तो मैं कल डबल टॉपिक करा दूं रीडिंग का कुछ.
इसकी क्लास थोड़ी छोटी करके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज we are doing away, we are not having any other class today now, okay? मैम ट्रू Okay. फॉल्स करवा देना कल। True false कल मैम करवा देते हैं। इंफॉर्मेशन पैराग्राफ मैम एक क्वेश्चन। Okay, Hello? I'll pick up a passage जिसमें which information is there in which para and true false दो तरह के questions है, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन। Yes. मैम मुझे ये पूछना है कि आपकी क्लास कब स्टार्ट होती है, टाइमिंग क्या है? 10 बजे। इसके अलावा और कोई टाइम नहीं है मैम? नहीं। ओके, सो सैड। क्योंकि मैम वर्किंग वालों को बहुत इशू होता है मैम, अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग रहता क्योंकि है आज मेरा ऑफ था तो बाय लक मैंने ये आपका आपके साथ अटैच हो पाई हूँ। पर एक्चुअली पता है क्या है, इससे पहले घर में काम होते हैं थोड़े से, फिर वो मेरे दो भूत हैं, नॉटी और नोरा, इनके काम होते हैं, इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, एक ही टॉय चाहिए, इनके पास 20 टॉयज है, एक टॉय के इवनिंग पीछे में लड़ना मैम, इवनिंग में भी बहुत कभी बड़ा नहीं हो होता गया है। और शैतान इवनिंग हो में भी गया। कभी नहीं होता है मैम। हाँ, इवनिंग में भी कभी नहीं होता है मैम, शाम में कभी नहीं होता है क्लास ना मैम? इवनिंग में नहीं होता कभी। नहीं होता है, ओके मैम। चलो, ओके, बाय, सी Thank यू you so much, टुमारो, ma'am. सी यू टुमारो, ओके, बाय मैम, टेक केयर बाय। मैम, बाय। Thank you so much.